क्या इसके पैसे से बहुत पानी इसको पहले करेंगे Hi guys, I guess आज आप लोग की मीटिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई है. Were you able to join the previous one? No, right? Because it is out. Okay. Yeah, आज आप लोग को शायद खुद से म्यूट करना पड़ेगा because the setting has been not done for this meeting. तो जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन कर रहे हो म्यूट करते रहना. Please make sure that you are able to mute yourself. All right. So almost towards the end of the sessions. We had done a lot. We have come a long way. काफी काफी चीजें पढ़ ली. Okay, just give me a second. Dilip and Manohar, can you mute yourself? Okay, sir. All right. ठीक है. So एक second, I will just open up Postman and everything that we require for today's session. MongoDB. In the meanwhile, I saw a project by someone on the Slack. I think Raj Kamal, right? Did you guys did you guys see the project Raj Kamal ka? He's not here in the meeting yet, but it's a pretty nicely done project, and I think that will give, yeah, Amazon clone. He has done an Amazon clone, and he would have used a lot of different technologies. React, backend ka data, I don't know where did he get from. Is he creating his own data, or once he joins we will ask him and have a quick run through of his project to understand what are the things that was required on his behalf. Okay, just a second. Let everyone know. आप लोग ने MongoDB का प्रोजेक्ट किया? Assignment? Were you able to write your test
cases? No? दिक्कत आ रही थी कि समय नहीं मिल पा रहा है? Time. Okay, you'll have to manage that क्योंकि फिर वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा अगर आप लेट सबमिट करोगे प्रोजेक्ट्स तो, and that will affect at later point of time. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था आप लोग से, very generic question. So my question is to everyone that that's one thing, Vikram. So my question for everyone is, like, if the same thing happens over a video, let's say, because timing का बहुत issue मैं देखता हूँ, and there are a lot of drop offs, and I am assuming that a lot of you watch the code at later point of time, और some people are like बाद में नहीं देखते हैं तो चलो सेशन में बैठ जाते हैं, फिर मैं अपने हिसाब से देख लूंगा कोड को रेफर करके, just that so that I can grab some things from the code. So if it can be mixed out, if it is mixed, let's say you guys are given a certain video set to complete by end of a week, and then you interact with the person for the whole week, how does that sound than having it every day? Because ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे आपने देखा कि मोंगो डीबी में आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए, या हमने स्टार्ट किया था 160 लोगों से, बचे 30-40 लोग, राइट? एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि वो 160 में से जो लोग थे उसमें से कितने लोग right? तो इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर एंड वी एज अ पीपल आर ट्राइंग टू solve it. Yeah, schedule is very important. Now the problem comes जब 160 लोग रहते हैं तो कोलैबोरेट करने में दिक्कत होती है, किसी को 7 बजे का टाइम सूट करता है, किसी को 10 बजे का टाइम सूट करता है, किसी को सुबह का टाइम सूट करता है. Yeah, you are unable to grasp it when you are live. Correct, I understand that. But how about if you go through the topics once and then interact with the person? How does that sound? तो लेट्स से जो हम लोग अभी सेशन में करते हैं उसका हम लोग वीडियो फॉर्मेट कर लें, आप लोग को सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस, we give you that module and you complete that module, and maybe after a week or so something we say that चलो आज live session रखते हैं on the topics that was discussed. Saturday Sunday. अच्छा, ठीक है. So will that, because that will, what I feel is आप लोग different people are working in a different fields, or you have your studies to take care of, these things you can actually get everything online आज के दिन में. अगर मैं बोलूँ कि कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, तो झूठ बोलूंगा मैं, right? So everything is available online, everything that we are doing is available online. It's just that the personal connect that you have is is helpful, right? Or it is something that is not required. Yeah, that is a good point. Live sessions makes you committed. That's a good point. And commitment is very, very important in terms of learning process. Because if you do not learn the process, then आप अपने टाइम पे तो कभी भी करोगे, लेकिन बहुत बार we slack on those stuff. All right. So that was something that I wanted to talk about and see how it works, and how important is mentoring in terms of your career choices. Let's say आपको हमने आज full stack development पढ़ाया, but आगे चल के what we are trying to do is we are
we also want to understand that whether you want to do it or not, because over the period of time, how I have interacted with a lot of students, and I have interacted with the students in the college जाके उनके sessions 4 credit subjects लिए हैं मैंने, and at that point of time I understood that there are lot of people, there are a lot of people who do not want to do coding. They just want to, um, they're just sitting there because आ गए बस किसी तरह. तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के दुनिया में भी, राइट? तो आई फील आई फील कि एक पाथ आपके लिए जरूरी है. ओके, हाँ करेक्ट वानी, करना पड़ता है टाइप्स लोग बैठे हुए हैं, बट उसका कोई पॉइंट नहीं होता है. लाइक आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने 4 साल इन्वेस्ट कर दिए, और फिर उसके बाद लेट्स से आई थिंक अभी नितिन ने बताया कि वो रेलवे सिग्नलिंग में काम करता है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मेरे को सुनकर ऐसा लगा कि मेरे को कुछ बताओ उसके बारे में. तो लेकिन हो सकता है कि मेरे को पसंद ना आए, मेरे को सुनने में इंटरेस्टिंग लगे शुरू में कि चलो रेलवे सिग्नलिंग है यार, इसके बारे में जानते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई आई माइट नॉट एंजॉय इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. So to help that bridge that gap, you would need mentors, I guess. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड. चलो, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट. एनी any business or anything that you are trying to do, if you are trying to build your own business or if you are going to work for any company, अगर किसी कंपनी में टेक नहीं है ना, so it is not going to survive for very long. Because everything is going tech based. तो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. चीजें सोच के सॉल्व करना इज वन एस्पेक्ट, एंड चीजें सोच के सॉल्व करना with the technology, with the in-house knowledge is a different thing. Okay, so I wanted to talk about this with you guys because most of you are going to be exploring a little more in the same field. So make your decisions based on what is required, what is needed, and how it fits for you. Maybe आपको UI UX पसंद आ जाए full stack करने के बाद, आपको लगे कि नहीं मेरे को फुल स्टैक नहीं पसंद आ रहा है, बट मेरे को डिजाइन फ्रंट एंड अच्छा लग रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, तो आप फ्रंट एंड के एस्पेक्ट्स में सोचना शुरू करोगे. यू आर गोइंग टू नैरो डाउन योर सर्चेस. if you like solving problems, if you like creating back end problems, brain of the website, you work on the back end. If you just want to dig on the data, create amazing databases which are very fast and stuff, you will just specifically focus on database. Do we have to choose for the companies or technologies depending on the company we wish? देखो, सबसे important होता है, मैंने पहले भी बताया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई भी कंपनी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पूछेगी, आपको एल्गोरिदम्स पूछेगी, और उस एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने का तरीका पूछेगी. क्योंकि अभी हम लोग ने उतना डिटेल में नहीं देखा है, बट इंटरनली हम लोग ने देखा कि चलो ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट है, इसके अंदर का जो कोड है वो ऐसा लिखा हुआ है. अब इस अंदर के कोड को, ये बेसिकली जो हम लोग गेट रिक्वेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ लाइब्रेरी दैट वी आर यूजिंग, एंड दे हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम of getting the request and receiving it back. Now, once you start creating such kind of things, you need to solve those problems, and you might use data structures. You are using data structures over here कि मेरा data का structure कैसा होना चाहिए which will be efficient for this particular problem, and उसके around algorithms कौन सा होना चाहिए. So people have already done a lot of research, people have done a lot of work on this field. So that's why we have this data structures and algorithm, which is very important. Do not think of it कि आपको सिर्फ जावा में ये लिखना होता है. It is a very subconscious thing. अगर मैं किसी डेटा या अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने फ्रंट एंड में, देन ऑल्सो वी माइट यूज कि अच्छा ठीक है, स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर्स का टाइम फ्रेम है वो बहुत कम है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके
एक फ्रंट एंड बनाते हैं और उस वे में मेरा वैल्यूज दिखेगा. टिकट बुकिंग सिस्टम क्या होता है? एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट? एक अगर टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में हम बात करें, इट्स अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर कि जिसका टिकट आया पहले, अगर किसी ने कैंसिल किया तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, राइट? अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है तो. सो the practical understanding and practical implementation of the things that you are learning is very important, क्योंकि ये applied knowledge होगा. This is what we call in educational terms a applied knowledge. Pedagogy के बारे में पता है आप लोगों को? What is a pedagogy? Word सुना है कभी? Pedagogy किसी को भी पता है? देखें इस सेशन में. Anyone has heard? So it's basically a teaching method or practice, right? कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लाइक मैंने आपको बता दिया एक्सप्रेस. अभी जो हमने आपको से बात करी है, हम लोग ने बहुत हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग की है कि ओके ये चीज़ें होती हैं और इसको यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इसके अंदर क्या काम होता है वो भी हमने देखा था और उसके बाद वी वेंट अ लेवल अप. सो whenever you are learning something, try to use or apply that knowledge in various walks of life. लेट्स से कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पता है और आपके पास एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे मम्मी ने बोला कि कपड़े कपड़े तय करके रख दो. अब आप कपड़े तय करके रखते हो, सबकॉन्शियसली आप क्या करते हो? एक के ऊपर एक स्टैक करते हो, राइट? दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग वेरी सबकॉन्शियसली, राइट? सो अ that is a peda that is the understanding, that is the subconsciousness that kicks in and lets you solve the problems in a much more efficient way, because natural instinct of human beings is to solve and survive, right? They need to survive in a much efficient way, much better way, and they need to develop themselves. That is a theory of evolution, correct? So when we are talking of theory of evolution, हो सकता है कि 200 साल 50 साल पहले लोग प्रेस करके ऐसे फैला के रखते होंगे, फिर उनको आइडिया आया कि अच्छा इसको एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे तो कम जगह लेगा एंड इट विल आल्सो सॉल्व माय प्रॉब्लम कीपिंग इट इन वन प्लेस. सो that kind of, when you are learning anything, you should think in the terms of applied knowledge, right? So that's, I wanted to just talk it out because I told you that we will be talking in terms of non-technical way and how to handle things, and this will give you a very good idea on everything that is happening in the world. क्योंकि मेरे को personally, this is a personal experience, not some study that I have done or something like this. This is a very personal experience I'm sharing. Most of the time when I feel a problem, like a smallest of small problem, let's say I want to fix a board somewhere. So what I do, what is the shortest distance that it will not tangle my wires, as well as I am reachable when I'm sitting on my table. What we are doing here is we are solving the problem by saying okay ये shortest distance है. Subconsciously आपको लगा कि चलो ये reachable distance है. Google क्या करता है? Google what it does is it solves the problem of shortest distance. जो भी shortest distance है या best possible way है, उससे आपको रास्ता दिखाता है. So what technology is doing is basically solving the existing problems in a much better way, in a much faster and efficient way, right? Because after all, everything is being made by humans. ऐसा तो नहीं है कि अपने से जादू जादू आ रहा है और एक कंप्यूटर बना के दे दे रहा है, which we are not aware of. We are creating whatever we are aware of. So whenever you are learning anything, learn in that manner. Make sense? आ जाए वापस कंप्यूटर पे. If the ज्ञान is done. चलो तो आज का हमारा पहले let's see if it is getting connected or not. आज का हमारा पर्पस है कि ये एक्सप्रेस एपीआई कंप्लीटली क्रिएट कर लेंगे हम लोग. सो वी विल गो इनसाइड रेस्ट, नॉट हियर.
Okay, if I say node mon, remember node mon? All right, Express cannot find. All right, did I remove the node module? So I have to install it. Cool. Okay, Minal, you need to mute yourself. Thank you. Okay, by the time it installs everything, let me just check my database in the backend. काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Database access. And I am able to connect, I guess. Oh, no, wrong. Okay, this is done. Clear it out. Let's try to run it. So we had created our very first endpoint, and this is starting now. Cool. We had created one of the middlewares, which was, what was the middleware that we had introduced? The very first middleware? The body parcel, right? And the second middleware was the routes. If you remember the diagram, we said that we are going to work with the middlewares, and middleware is important how our request is coming in. And we sent out some requests and we were sending out the responses based on that. All right, तो हमारा जो database था, let me check. It is getting connected. I'll share the screen of database. So this was the database. Backend में Avengers create किया था हमने, और यहाँ पे कुछ IDs थी. तो अभी हमने एक बस creation का एक endpoint बनाया for the post request, and it is creating the request. Now what I want to do is I want to add a name to this. Okay, I want to update this Avenger. Maybe just send some updated values and update that field. Let's create a endpoint for that. Someone is trying to admit himself. Okay. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले we are going to create it in the routes, क्योंकि जो हमारा request आएगा, it will come as a /API/Avengers, and as soon as I encounter /API, it will route me to the routes.js. Okay, whoever is joined right now has to mute yourself because आज की settings हमारी change हो गई है थोड़ी सी. All right, so now it comes to the route, and since we will be sending the put request, we need to create a put route. Now this will be the put request route. अभी हमने post request route बना ली थी. Let's create a put request route. Put request route. All right. So now that we have created a put request route, what I need to do now is create routes, because this is something that is being used from the router method, which internally is going to route our request depending on the method that we are using. So if a put request is coming from /API/Avengers, and if you remember, it also had an ID, because we will be requiring some ID that is getting generated for that particular person. तो हम लोग क्या करते हैं, put request में, okay, the endpoint is going to be Avengers / now we use :/ID. Now what this colon does is we need to specify that this is the route parameters. So I'll just create route parameters. Now this, अब हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर एक different request के लिए, हर एक ID के लिए अलग अलग routes create करें. Correct? So this is going to be dynamic in nature. As soon as the people are sending request with an ID, it will identify that I have to dynamically update this route,
एंड बेस्ड ऑन दिस जो भी हम फंक्शन लिखेंगे पुट के अंदर दैट इज गोइंग टू गेट रिजॉल्व. सो इसके लिए हम लोग लिखते हैं जो भी आएगा रिक्वेस्ट ये कॉल बैक में एंटर करेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड हियर वी आर गोइंग टू रिसीव दैट. तो सबसे पहले बॉडी देखते हैं console.log request.body. Now this will work because my application is going to read the body parser in the JSON format because हम लोग जो भी request भेज रहे हैं वो JSON format में आ रहा है, उसको हम लोग parse कर रहे हैं और उसके बाद it goes into the routes where we receive the request and hence we are able to see the request body. Okay. So when we talk about route parameters, the request is going to be something like API/Avengers and which Avenger I am updating. अब हर एक एवेंजर, अब हमारे पास 100 एवेंजर्स हैं या 200 एवेंजर्स हैं, हर के लिए अलग राउट तो नहीं बनाएंगे. सो देर इज दिस option of route parameters, which is basically colon and whatever name you want to do. Usually we take up ID, you can give a name or you can give whatever value you want, Avenger, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज आगे चल के. जो भी आप डायनामिकली भेजोगे वो इस पर्टिकुलर पैरामीटर में सेव हो जाएगा. तो if I send some request like API/Avengers/23, so if I send this, ID will become 23 for that particular request. Or similarly, if I send 45, तो जिसका भी आईडी 45 है हम लोग उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, राइट? तो राउट पैरामीटर्स comes in handy when we are trying to target Avengers one by one using the IDs. तो इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा ये आईडी. तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट बॉडी में ओके, बिफोर आई डू दिस आई विल टेक यू टू पोस्टमैन. So in the postman, you had seen the query parameters, right? You had seen some query parameters that is being sent. तो जब हम यहाँ पे request भेजेंगे /id, जो भी id 1 2 3, this is going to be mostly the id that is getting generated from the database. तो वो id जब हम pass करेंगे, that will become a parameter automatically. All right, and that parameter will be what we are going to capture in our function over here. तो request.body, so request.params. अब ये params जो होता है, there can be a list of params. You might have seen question mark and the name is equal to what and password is equal to what and something like that. Okay, so this request.params will hold all the parameters that we have created. तो यहाँ पे हमने request में ही बता दिया है कि dot colon जैसे specify करेंगे, it will read it as request parameters. Now this request parameter के अंदर से ये ID field होगा. Now this name has to be what you have used over here. Now if you use it as name, this will become name. Okay, so for now I will just put it at ID. And इसके अलावा I will just say request.params.id. Clear till here? Make sense? A wildcard, yeah. Make sense? Yes, I know. That's what we are going to solve. तो ये आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, तो हम कैसे कैप्चर करेंगे इस आईडी को? उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए. वी शुड नो द डेटा, राइट? Without knowing the data, you cannot capture the ID. So for that, what we will do is we will just take a shorter route at the moment because we know which ID we are targeting. तो कंपास पे चलते हैं और ये ID को एक्सेस करते हैं. बेसिकली थॉर का जो नाम है वो चेंज करना है. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस, go back to my postman and put that ID over here. Now this is what we are trying to target.
So this will become our ID. और इसी ID से फिर हम वापस डेटाबेस हिट करेंगे और उस डेटाबेस में अपडेट करेंगे. Make sense? Now this has to be put. अब हमें इस पुट रिक्वेस्ट में एक बॉडी भी भेजनी पड़ेगी. अगर मैं ये बॉडी भेजता हूं जो अभी है यहाँ पे, दिस विल एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम. इट विल चेंज द नेम. जो भी मेरा नेम फील्ड था थॉर, वो अपडेट होके स्टीव रॉजर्स हो जाएगा. आई डोंट वांट दैट. लेट मी फर्स्ट सेंड दिस. तो यहाँ पे ये हो गया, कैप्टन अमेरिका है, हमने पुट रिक्वेस्ट अपडेट कर ली और हमने एक एंड पॉइंट बनाया है जिसमें आईडी एज अ क्वेरी पैरामीटर जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू गेट द एक्सेस टू द डेटा दैट वी हैव. तो अभी हमारे बैकएंड में कुछ नहीं आना है. ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. सेव करने के बाद ये एस्टैब्लिश करेगा कनेक्शन एस्टैब्लिश टू डीबी. आज इट इज हैपनिंग वेरी फास्ट. गुड थिंग. एंड आई एम सेंडिंग इट फ्रॉम पोस्टमैन. मैंने वो चीज भेज दिया है. यू माइट हैव सीन सम चेंजेस. डू यू सी the data that has come up? The data is Steve Rogers, Avenger name Captain America, ID. So जो request parameter का हमने access किया था, तो request parameters में one of the parameter was ID, and the value of that is this, and request.parameters.id was this ID. So this is very clear now that okay, now I have got the access and I have also got the data that needs to be updated. तो हम लोग इसको यूज करके क्या करते हैं? We are going to say I want to update it. So I will go ahead and say Avengers dot find by ID and update. Okay, find by ID and update. And what first parameter that we send is what to find. So हमने underscore ID capture किया हुआ है अपने request dot params dot ID से. इस particular ID को हमें अपडेट करना है. और किससे अपडेट करना है? जो भी हमारी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है, विच इज दिस बॉडी, राइट. अभी के लिए तो मैंने बस प्रिंट के लिए ये नाम भेजा है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस लिंक्स विद द राइट बटन और राइट एडिट फील्ड. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, राइट. कि अब हमें जो भी अपडेटेड वैल्यूज आएंगी, इट कैन बी वन वैल्यू, इट कैन बी टू वैल्यूज, और अगर हमने कुछ भी नहीं भेजा तो इट विल स्टार्ट showing me error because कुछ required fields हैं उसमें, right? So we have this, and first thing is it is going to search our database by the ID that we are sending as a part of parameters, and it is going to update it with the value that we are sending as a part of the body. Okay. Now what we will do is, once it has updated, because this is a promise based library, once it has updated, it will receive a data and then I will create the response. तो जो भी data आएगा, I will response.send. Okay, and I'll say Avenger, or sorry, data, whatever data I'm receiving. Let's check it out if it works. So I will save it. It will make the new connections. Okay, database is connected. And let's go to our field in Postman. अभी के लिए हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया था उस समय भेजने के लिए, क्योंकि हमने कोई रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं किया था हमारे बैकएंड से. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग द नेम हम लोग बस एक एवेंजर नेम चेंज कर लेंगे, बिकॉज हमने देखा था मेरा डेटा जो है उसमें एवेंजर नेम नहीं था. तो उसके लिए MongoDB ले चलता हूँ आप लोग को. MongoDB में सिर्फ नेम है और स्टेटस है, बट देयर इज नो Avenger name like rest of them. So I am updating this data field with the put request. So let's go to Postman again. And once I send this request, this remains the same. हमें change करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम specific data पे handle कर रहे हैं. And we see
the fields, but do you see the updated field? ये प्रॉब्लम हमने ये प्रॉब्लम हमने एक बार और फेस की थी. Do you remember? What it does is it updates the data, but it sends back the previous data. अगर मैं अभी जाके अपना database check करूँगा, it will have the data that I'm looking for. So if I refresh this, what do you see? Avenger name is there. Captain America भेजा था हमने as a Avenger name. Okay, we will update this again to Thor. तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे कोड में वो नहीं आ रहा है. And the reason is because that is how it behaves. Find by ID and update behaves similarly. And it also says find one and update and find one and delete without the use and modify option set to false are deprecated. तो ये वार्निंग को अभी भूल जाओ. यहाँ पे एक फ्लैग लगाना होगा and that flag is called new is equal to true. ये फ्लैग से क्या होगा कि अब हमें what I'm asking this find by ID and update to do is give me the new data. Okay, so I'll save this and send back the request from postman, and I will call this as Thor. And let's send this request again. And now you see the updated data is coming. Pretty awesome, right? अब ये चीज हम डायनामिकली हैंडल कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड में कि कैसे हमें डेटा फेच करना है, कैसे हमें डेटा फेच करना है. How do I fetch this data? So to fetch this data, we would require to actually have, all right, people who have joined right now might have to mute yourself. Gachi and yeah, thank you, Krishna. All right. So now we have updated this field and this has updated over here. Are you understanding the flow? Able to understand the flow over here? Any doubts here? Okay, I'm assuming no doubts, understanding the flow. But let's suppose हमने रिस्पॉन्स भी जनरेट कर लिया, वापस भी भेज दिया. अगर हमने गलत रिस्पॉन्स क्रिएट किया हो, या let's create another response and change this data to, let's create an empty response from name. हमने क्या किया कि नेम की फील्ड में कोई डेटा ही नहीं भेजा, ठीक है, empty response भेजा, because this is going to understand this as empty string. This is a falsy value, remember, falsy value, and we said this is a required field. Let's see what happens. Now if I send this, it updates it with a falsy value. तो ये read नहीं कर रहा है, correct? What it is doing is it is taking it as a value. It is taking it as a value because अब हम update कर रहे हैं, तो उसको ये लग रहा है कि जो भी existing नाम था उसको change करके ये कर देना है, whatever we are sending. But if I do this for post, let's create a post value. उसमें हमें ये field नहीं चाहिए होगी, and I will not send name. I will just send a Avenger name, and let's call this Jarvis. ठीक है, ये भेजते हैं. ये क्रिएट ही नहीं होगा, राइट? ये क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि हमारा वो चीज हैंडल नहीं हो रहा है. नाउ इफ आई सेंड अ नेम ओवर दिस, we will have to give the name Jarvis, and the field, you know Jarvis is dead, right? Status false. So false means कि नहीं है. Now it creates a status ID
name Jarvis. So this endpoint is working. अब जब भी हमें data कोई भेजना हो, तो I can send the data in the format like this, and it is getting saved. Now, if I have to edit this particular field, I will capture this field, put it in a put request, and say, okay, we found out that he was alive. So I will send this data. But do you think this whole data was required? I don't think so. Because that is the beauty of objects, and that is the beauty of the stack that we are using. It automatically understands that, okay, whatever field we need to update, we will send it. This is something very similar to this dot set state. Remember, in the set state, whatever state we want to update, we only use that one. So similar to this, we also just wanted to update it to the status. So I just want a for, sorry. Now there is also a check of data type. So if I send this as he is alive, do you think this is going to work? It is not, because it was a boolean. Okay, so it will not work. Let me cancel this out. I will make this as true. And once I send it, the status is updated. So you must be understanding that what is this the usage of having these routes defined, having these functionalities defined individually. तो अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो डिलीट के लिए भी सेम यूज होगा और क्रिएट के लिए भी सेम यूज होगा, करेक्ट? तो लेट्स गो क्विकली अंडरस्टैंड और क्रिएट दोज फील्ड्स. सो अभी के लिए हम लोग एक डिलीट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं. Delete request, copy this whole thing because this is going to look very similar. ID, because we are going to send an ID to delete, and then find by ID and delete. So find by ID and delete में क्या होता है? What will we get as a response? The deleted data. ठीक है? And that data I'm going to send as a response. All right. So once I saved it, let's go and delete something. One second before I share it, I'll just split the screen for you guys so that you can see the postman and the database together. Okay, I can't do this. अच्छा database यहाँ रख देते हैं. Just a second. I think आप लोग का screen size half हो गया होगा. But don't worry. Oh, MongoDB, I tell you. Anyway, I'll just share the two screens that we were doing initially. तो अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा आ चुका है. थॉर का डेटा तो हमने एम्प्टी स्पेस की तरह क्रिएट कर दिया था. टोनी स्टार्क इज देयर, कैप्टन स्टीव रॉजर्स इज देयर, एंड जॉर्विस इज देयर. So let's delete Thor. I want to delete this person. So I'll copy this and go to my postman. And now my request is going to change. I think मैंने backend में change नहीं किया है. Did I change it? The code. I have still kept it to put. Yeah. So I need to change this to delete because then the delete functionality will not come into picture. So once I'm changing this and I'm sending that request, I'll just attach. You remember template strings? Did I tell you about template strings? Yeah. So I'm going to attach a message over here. Data deleted. And instead of plus, we use dollar and the dynamic value. ठीक है? Data deleted और ये मेरा response बन के जाएगा. क्या ये काम करेगा? क्या लगता है आप लोग को? Let's see. Because अब हम लोग से बोलने पे नहीं believe करते हैं. We believe in implementation.
एंड जाविस का या थॉर का जो भी जिसका भी डेटा था, एंड जस्ट गो अहेड, कॉपी दिस, जाविस का ही डेटा डिलीट करते हैं फॉर नाउ and send this request. And it says callback must be a function, got an object. So some issues, copy paste issue हो गया है. चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है कोड में. All right, so let's find out. Callback must be an function. All right, cool. तो अब delete option में ये request body का कोई काम ही नहीं है, ठीक है. delete option में इस request body का कोई काम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, हमें बस डिलीट करना है. तो ये इस पर्टिकुलर मेथड का पार्ट ही नहीं होगा, एंड इसके वजह से वो कॉल बैक फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. ओके, वन इज दिस, एंड आई डोंट थिंक वी वुड रिक्वायर दिस, बिकॉज अगर न्यू ट्रू करेंगे तो बैकएंड से जो डेटा आएगा वो एम्प्टी डेटा होगा, तो वो उसको मिलेगा ही नहीं इस आईडी से. ऑलराइट, दिस लुक्स लाइक दिस वाज द इशू इन आवर कोड. नाउ लेट्स गो बैक एंड चेक इट आउट. पोस्टमैन में and send it, and you see data deleted, status true, and Jarvis has been deleted. Okay, the form of data doesn't look like JSON because हमने क्या किया है, क्लब कर दिया टेक्स्ट. तो जैसे ही टेक्स्ट हमने क्लब किया वो एप्लीकेशन डॉट जेसॉन से मूव कर गया. अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट होता तो इट वुड हैव गिवन अस अ रिस्पॉन्स जो हम लोग पहले देख रहे थे एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में. तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि किस फॉर्म में डेटा आ रहा है या किस फॉर्म में आपको डेटा चाहिए. अब let's go to our database and understand that whether it has been deleted or not. तो अभी Jarvis दिख रहा है. Let's refresh and you see Jarvis is gone. You can see that Jarvis is gone because we have deleted that data. Okay, तो चलो आप लोग ये बताओ कि हम लोग अब get request कैसे यूज करेंगे. How will we create get request? Delete request कर लिया, put कर लिया, post कर लिया, सबसे पहले get request करते हैं. Get request routes dot get. What is the first thing that we need to give over here? The route slash Avengers. ये अपना एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट सेम होंगे, राइट? क्योंकि हमें सारे एवेंजर्स चाहिए, जितना भी मेरा डेटाबेस में फील्ड्स हैं वो सब चाहिए मेरे को. अब इसके बाद एक कॉल बैक होगा and this will have request and response. Okay, all right, we go here and इसको थोड़ा नीचे कर दें. What should we do? How do we find people or how do we find the Avengers? एक सिंपल फाइंड चाहिए मेरे को, सारा Avengers चाहिए मेरे को. I'll just go ahead and say Avengers dot find. ठीक है, और इसमें if I do not put any condition, it is going to find everything. And I will say dot then once I receive some data, I will say this data and send that data as a part of response. So response dot send the data. तो ये डेटा कैसे फॉर्मेट में होगा? देयर विल बी मल्टीपल डेटा, देयर वोंट बी एनी जस्ट वन डेटा, राइट? सो उसके लिए वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट. ये बहुत बेसिक है,
Get request is very basic. We are just not giving any kind of, uh, we want to find everything actually. So when we are trying to find everything, what we are doing is we are just fetching everyone based on find method which takes in some condition. Basically यहाँ पे हम अगर हम सिर्फ find use कर रहे हैं तो यहाँ पे condition डाल सकते हैं कि name कैसा हो या place कैसा हो and all that thing. Location क्या है या Avenger name क्या है, we can put that over here, something like Avenger name is equal to Thor. ऐसा ऐसा करके request डालेंगे तो it is going to find me this, but I want everything, so I do not pass any condition over here. So empty condition. Okay. Now let's make the request to get from our postman and see what it looks like. So अब हमारा get request आएगा. We won't need this because our endpoint doesn't handle this. All right, and let's make a request. I am making a send request, and as you can see, this is an array, and this array has all the fields. Cool. Now let me take you back to multiple classes, multiple classes where we were dealing with states. क्या लगता है जब मैंने आपको बोला था कि जो स्टेट होता है मोस्टली डेटाबेस से आता है, does it look like that this can be used as a part of database, sorry, states in React? तो ये मेरा API अप एंड रनिंग है. एक काम करते हैं, ये सारा डेटा हम लोग फेच करते हैं अपने React में, and things are going to make more sense कि कैसे ये काम कर रहा है. तो उसके लिए Abhishek, you need to mute yourself. Yeah. तो इसके लिए हम लोग को एक नया React एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा. तो अभी इसको चलते रहने देते हैं. एक और नया टर्मिनल खोलते हैं and I will say npx create React app find, or let's call it Avengers. Things are getting real, right? Okay, तो जब तक ये बन रहा है अभी हम लोग को एक और मिडलवेयर के बारे में बात करना है जब तक ये अपना इंस्टॉल कर रहा है. Alright, so now what we are going to do is we are going to go back to routes. One second guys, there is a disturbance, sorry for that. Okay, so there is one middleware that is still left. अभी हमने कोई error handling नहीं किया है. Let it install. Let's talk about a little bit about error handling as well. हमारा एक मिडलवेयर है बॉडी पार्स करना. जैसे हम डेटा रिसीव किए उसको पार्स किए JSON फॉर्मेट में, फिर हमने राउट्स में भेजा, राउट्स में प्रोसेसिंग करी, डेटाबेस से इंटरेक्ट किया यहाँ पे, और फिर रिस्पॉन्स सेंड किया. सो यहाँ से रिस्पॉन्स सीधा सेंड हो जा रहा है. सो द रिस्पॉन्स इज कमिंग बैक ओवर हियर, एंड देन since this is responsible, this is the server, this is sending it back, and that is the request response model. Now imagine this whole scenario without an error condition. So there was some pre generation of errors, right?
कुछ कुछ एरर्स आ रहे थे अजीब से जब हम लोग कुछ गलत डेटा भेज रहे थे. But instead of doing that, what we can do is we can formulate our errors. We can say that whenever there is an error, or let's talk about some specific errors. Whenever there is an error specific to malformed, or if we are trying to create something with a without the name, something like that. So when we send that request, there was this weird error that was getting generated in the backend, and from that error, it was sending it to the postman. But we don't want that. What we want to do is we need to create a functionality where this whole control of the code moves. Basically, अगर यहाँ पे response नहीं बना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जो भी डेटा आ रहा था as a part of your response, यार वो send कर दे रहा था. But what we want to do is अगर ये fail हो रहा है या response सही नहीं है, तो I want to move it to another handler, a middleware which handles errors for us. Okay, so first of all, let's create another middleware and we will call this as error handler middleware. So this is a error handler middleware, correct? Now this error handler middleware is going to help us to solve our problem whenever we encounter any kind of error. तो app dot use, क्योंकि use में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, एक नया मिडलवेयर. जैसे बॉडी पार्सर यूज करो, फिर एपीआई राउट्स में जाओ, एपीआई राउट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आओ. तो ये कैसे करते हैं, इसको करने के लिए we have one more input or a parameter to this request response callback that we are creating, and that is called next. That is called next. So when the next comes into picture is whenever we are failing at some point of time. So we will stick to post request here, and when once this response fails, what I want to do is I want to shift it to the next middleware or the next handler. So for that, I will say, because this is a promise based object, अगर मेरा promise solve हो जाता है, then send the response. अगर resolve नहीं होता है, then we catch it and say move to the next one. And how do we say it? We say next. So this is again a part of our parameter. So this very easily understands that there is a next function which I have to move on if there is a failure or if there is an error that is being caught over here. So this next becomes the part of every error handler. And here, let's add it to this, this, and this. और जैसे ही response, क्योंकि ये promise based object है, I'll just clarify it here. This is the one that is working for us, and then dot catch. Next. Here, again, similarly, dot catch. Next. तो हम बोल क्या रहे हैं कि आप बस नेक्स्ट फंक्शन पे मूव कर जाओ अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स या एररनेस रिस्पॉन्स होता है. And that next will move on to the next error handler over here. It will come out of the routes and it will see that, okay, this is the handler that I have to move on. And this is the next one. So we move over here. Now here I'm saying I will create my own function, error handler function. Okay, and this error handler function is going to help us create the error messages or distribute our error messages in a much better way. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरर दिखता कैसे है. चलो वो बन गया है, वी विल मूव टू दैट लेटर. बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये अजीब से एरर्स जो आ रहे हैं, अनहैंडल्ड प्रॉमिस, वार्निंग, कास्ट एरर, कास्ट टू बूलियन, ही इज अलाइव. ये सारे एरर्स मेरे को यूजर को भेजना है, ठीक है, इन अ मच बेटर वे. And this is where our error handler will come into picture.
And this error handler is going to be encountered only if there is a failure in the routes, depending on the functionality we have written. अभी तो हमने simple functionalities लिखी हुई हैं, और इसमें भी अगर कुछ problem है तो next पे आ रहा है. Now when we create an error handler function inside this, we can actually do it in a multiple ways. अभी मैं यहाँ पे create कर रहा हूँ, but a better way of doing is create a folder and call it as error handlers. Okay, or just call it as errors. Now here you will create a new file called error handler function .js, and यहाँ पे आप एक module based system create करोगे, जो कि मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, but I will leave it to you guys to include it as a part of your middleware. So whenever we are creating any error, the first parameter that it receives is the error. The second parameter it receives is the request object, the response object, and then if there is any next thing that we move on from here, if there is any next functionality that we move on from here. Okay, now what we need to do is first of all check for errors. तो हम लोग response dot send, अब यहाँ पे हम response create कर रहे हैं instead of creating a response then and there itself. Let's say हमने body नहीं भेजी ढंग से, error create हुआ, वो next move करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम create कर रहे हैं, और response dot send में we are going to send just the error and see what comes as a part of error. Okay. All right. Now let's go to Postman. Make a post request and send a post request. Let's send this request because this is going to fail definitely. Let me just check. Yeah, connection is made. And send a request. What do you see? Does it make more sense? You see a very nice error messages in a form of JSON. अब अगर ये मैं कहीं भी रिसीव करूं अपने फ्रंट एंड में, क्या हो रहा है कि ये is moving to that particular error handler, but यहाँ पे status 200 okay है अभी भी, which is something that we should not do when we are sending a response like this. Correct? तो एक ये handle करना होगा हमें. But apart from this, this looks like we can actually extract the thing that we want from this error and formulate this as a error message or a object and use it to send as a response. तो हम लोग, अगर मेरे को ये message चाहिए तो I can say error dot message Avenger validation failed, name path name is a required field, which is enough for my user to understand. For myself I can actually say कि type is required, path name, but अभी हम लोग को बस ये वाला message is enough, which is pretty evident. तो मैं बस ये message extract करूँगा and I will send it as a part of my error. Okay, तो ये errors field में I'm just going to update this message. How should we do that? We will go to our code, back to our code. I know error dot message has arrived to us, और एक status भी गलत था, तो response में हमें अगर status add करना है, so we use the status method, and on that we send, after the status is set, we send that. Now status can be set by saying 422. 422 is a message when we have a malformed request from the user. 400 request, right? If a user is sending a malformed data. And here what I'm going to do is I'm going to create an object and call this as error, right? No, we don't want to create JSON because that will be already done by the response. And this error is going to be nothing but error dot message. Does it make sense? I hope you guys are not getting confused with this one.
ZSH terminal तो Mac का चीज है. If you update your Mac and you had a previous terminal with an SSH, uh, now it has moved to the ZSH. It's an environment. Okay, coming back to my question. यहाँ पे समझ में आ रहा है? Any doubts? If I save this and go back to our postman and now again make this request, definitely this is going to fail. And Avenger validation failed, name path name is not required. So you see how development is done. Maybe you would require it in the backend. कहीं पे अगर internally वो method call हो रहा है कहीं और same backend में ही, तो वहां पे वो error important होगा. But यहाँ पे देख रहे हो 422 unprocessable entity, which means the request was well formed but was unable to be followed due to semantics error. Make sense? That how it is important in terms of the request that we are sending back. So here we see that the details are being sent, but there is an error that is happening, and that is a part of our middleware. That is a part of our middleware. समझ में आया? और यहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं आया. जो गंदा सा मैसेज देख रहे थे हम लोग शुरू में, ये इस टाइप का, वो हमने यहाँ पे नहीं क्लिक हुआ क्योंकि अब हमने एरर हैंडल कर लिया. Basically, this whole thing can go inside my error handler function, and then I can export it as a module and I can create multiple other errors, and based on the next response हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास नेक्स्ट का डेटा आ रहा है या जो भी हम रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें what is the kind of error that we are getting, and based on the error we can formulate that. So we have created a backend API which is up and running. उसके endpoints रेडी हैं सारे. अब इन endpoints को हमको यूज करना है. तो लेट्स गो टू आवर एवेंजर्स ऐप. हम सोर्स पे जाएंगे, app.js पे जाएंगे, bash. Okay, I will cd avengers, clear it out, and I am going to start the server. बहुत जब तक ये स्टार्ट हो रहा है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. I don't want all this. We will create this as a class based constructor. लोगो नहीं चाहिए हमें, CSS रख सकते हैं. Let's keep it. I will create it as app extends components. Now components ऐसे आएगा नहीं, तो हमें import करना पड़ेगा react / components from react library. Okay. अब यहाँ पे सबसे पहले render method, quick revision of react as well. render method के अंदर हम एक चीज return करेंगे. अभी ये return बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, बट अभी के लिए h1 Avengers list. All right, cool. Now we have got this Avengers list. इसको अगर हम सेव करें, let's see if my application is up and running. Have I made some mistake? Okay, let me just go to the output first.
right, this is the problem. Okay, तो जो मेरा क्रोम है वो एवेंजर्स लिस्ट क्रिएट कर लिया है. अब हमें क्या करना है कि जो हमारा सर्वर चल रहा है उस पे जाके हिट करना है, डेटा रिट्रीव करना है, और डेटा रिट्रीव करने के बाद उसको हमें डिस्प्ले करना है, या बेसिकली स्टेट अपडेट करना है, और स्टेट अपडेट करने के बाद उसको डिस्प्ले करना है. कैसे करेंगे ये चीज़? तो उसके लिए we might want to get a library called Axios library, which is again a promise based library. So I will install again npm install Axios. Axios एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जो जितने भी प्रॉमिस बेस्ड ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे थे अभी तक, सेम फंक्शनैलिटी होगा इंटरनली, बट इट इज मेड टू यूज फॉर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट. ठीक है, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने बैकएंड से, हो सकता है डेटा आने में कुछ टाइम लग जाए. करेक्ट. So to make a Axios get, we are going to make just simple Axios get request. Okay. So when we are going to make a Axios get request, it will it will fetch me the data from the backend that is up and running in my other server, which is this one. तो ये एक मेरा बैकएंड का सर्वर चल रहा है, ये मेरा फ्रंट एंड का सर्वर चल रहा है. सॉरी, अभी चल नहीं रहा है, चलाते हैं अभी. npm start and एक मेरा डेटाबेस का सर्वर चल रहा है विच इज ऑन क्लाउड. तो 3 सर्वर्स चल रहे हैं हमारे. व्हाट डिड आई डू? npm start, दिस इज करेक्ट राइट? हाँ, दिस इज गोइंग टू वर्क. तो अब के लिए हमारा बैकएंड अभी बंद कर देते हैं सारा. आप रखते हैं एरर राउट्स एंड एवेंजर्स आर क्लोज्ड. नाउ वी विल क्रिएट सम स्टेट, एंड मेरे को पता है मेरा डेटा कैसा दिखने वाला है. सो आई विल क्रिएट अ स्टेट एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी एरे. ठीक है, और इस एम्प्टी एरे में आई नीड टू अपडेट दिस. I need to update the state. So how do I update the state? How do I make a get request to my backend? Is a question that you must be asking yourself, right? Okay, so to do that, first of all, we need to import Axios, because Axios is a library from the Axios that we have got. Okay. Now this is a get data function, and this is going to be a callback, and this get data is going to make this request to the Axios. तो यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं, button, and this will have on click, this dot handle click. Let's just keep it at this, and the name is get data, और इसका नाम रख देते हैं handle click. All right. Now once we get handle, based on handle click, why is it showing me an error? Because I have no div. If we have multiple values inside here, we need to wrap it around div. ये तो revision हो रहा होगा आपका. We'll put it inside div. Cool. So we have a get data button. अभी हमारे पास state में कोई data नहीं है, और हमने देखा है कि मेरा जो postman से request जो generate हो रहा है, let's go to postman and check the data that we have seen. So let's make a get request. And we see this is a data in the form of this. तो हमारा जो empty state है
वो इस डेटा से अपडेट होना है। अब वो कैसे होगा? Here lies the trick. Axios is the library who is going to fetch to this particular backend and say that ठीक है मेरे को डेटा चाहिए, और वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, वो what is the request that I am getting. तो inside this handle click, what I'm going to do is I'm going to say Axios, and it has this get function. Okay, now this get function will take the URL. What is the URL? Now the URL is something that we want to pass as a request to the backend. तो backend का URL क्या था मेरा, जो अभी हमने postman में लिखा हुआ था वही होगा। तो ये मेरा URL हो जाएगा, कॉपी कर रहा हूँ मैं postman से and paste कर रहा हूँ. So this is the URL that I want to make the request from, right? This is the URL. Now once I get the request, I will say dot then, because this is a promise based library, and I will say data is going to be nothing but console.log the data. अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस console.log कर रहे हैं, and let's save it. So let's see if it works or not. Go to our value, console खोल लेते हैं. Initial जो values हैं, console में कुछ problem हो सकती है. Is it a problem? App must be set to an object or null. Is defined but never used. It is used. Axios. Oh, sorry. Okay. Let's refresh. So this is clean now. Now if I press this, here comes a request that it has been blocked by course issues, no access, header is present on the requested thing, all this network error. Now this is not the error that is getting from our application. The problem is with the access control. अब हमने अपने backend में course नहीं add किया हुआ है. Course क्या होता है? It's a cross origin resource sharing. So यहाँ पे मैंने एक plugin install किया हुआ है called course, and I will say enable. तो होता क्या है कि जब भी हम request करते हैं data, backend से जो data आ रहा है या anything that is coming from the backend, it is going to give me some issues saying that there is a course issue. क्योंकि हमारे backend ने allow नहीं किया है किसी भी origin, cross origin resource को add करने से. So how do we solve this? What is the problem? The problem is not with the request. We are sending the request, but we are getting some error. So first, let's take a look at the error handling. तो यहाँ पे तो error आ रहा है. Let me share the screen. Let's go to code. Yeah, यहाँ पे तो error आ रहा है. So what we will do is we will say dot catch, and this will have some error as a function, and I will console.log error. Let's see what happens. इसको सेव करते हैं और एरर को थोड़ा बेटर फॉर्मुलेट करते हैं. एरर आ तो रहा है लेकिन उसको थोड़ा पहले स्टडी करते हैं कि एरर है क्या चीज का. लेट्स रिफ्रेश दिस. ओके, so it is going into that function and it is showing me that this is the error. This is the error that we have. Okay, संकेत आपका वीडियो ऑन हो गया है. You can close your video. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एनी आइडिया? किसी ने कभी सॉल्व किया है ये इशू? कोई पूछ रहा था उस दिन कोर्स इशू के बारे में. कोई पूछ रहा था कोर्स इशू के बारे में. Any ideas? What is, how to solve this course issue? Yes, correct. Use a course middleware. तो चलो course middleware देखते हैं क्या होता है.
तो अभी तक हमने जितनी चीजें इंस्टॉल करी हैं, दिस इज द एक्सप्रेस कोर्स मिडलवेयर. It is a node package. I think I need to stop the video. किसका वीडियो ऑन है? संकेत का. Just give me a second. Sanket, you can stop your video if you can. Okay, yeah, he has stopped it. Cool. So, Course is a node package for providing a connect that can be used to enable Course with a various option. तो similar to this, हमने ऐसा ही कोड लिखा है, और इसी कोड को we are going to replicate. So this is a middleware. This is a middleware for our backend. Again, a middleware is coming into picture. तो आप देख रहे हो कितने packages deploy होते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें, and how dependent it is. But the best part is, it is all separate. npm install cors. CORS is cross origin resource sharing. तो ये problem होती है because when we are making this request from one domain to another domain, our backend is failing to understand that this request is coming from something outside my own domain, which is my backend domain. And that's why it can be malicious in nature, and it can hamper my code, or it can read the data. It can be malicious. So that's why they have used this, and we need to apply this. Let's get it connected. First of all, we will say course is equal to require CORS course. और ये middleware हम कहाँ use करते हैं? Where do I use this middleware? I can use it right at the top before we are making any kind of requests. So यहाँ पे course app के ऊपर use करेंगे, and we will say after this app dot use course. Okay. So let's see if it solves our problem. Error handling. Oh, sorry, not error handling. Cross origin. Resources. तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब जो रिक्वेस्ट आएगी इस पे, we are going to solve this. Like कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, it should be accepted. So let's go back to our Postman से आपने देखा था ये रिक्वेस्ट प्रॉब्लम नहीं कर रही थी. It started happening when I started making this request from the browser. Browser is a different domain altogether, right? And that's what my browser is able to understand, and it is saying that where did my browser go? Yeah. So when I was making a request from here, it was saying uh, that I'm not going to apply it because there is some issue with this. So मैंने backend पे change किया, मैं front end up and running है. Let's send this request, and what do you see? Do you see something interesting coming in? So there is a lot of data that is coming here, and inside this data there is this field called data automatically, and which is the name of the Avengers, the thing that we wanted. We wanted this data. Okay, now this looks interesting. Now what we will do is we will go to our code. Where did that go? तो मैंने बैकएंड में सेपरेटली हैंडल किया एक इशू जो प्रॉब्लम हुआ था मेरा बैकएंड में. फ्रंट एंड को कोई चेंज नहीं किया मैंने. फ्रंट एंड जैसा था वैसा ही रखा. तो इसको एक्चुअली नाम चेंज कर देते क्योंकि इसके अंदर एक डेटा आया था एवेंजर्स करके. तो इसको हम लोग एवेंजर्स का नाम दे देते हैं, एंड दैट इज हाउ इट विल गेट द नेम what you see on your Chrome browser. So let's go split the screen and share the whole desktop with you guys for a better clarity.
तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में मेरा डेटा है और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कोड है। हमने कुछ नहीं किया, हम रिफ्रेश करते हैं इसको और हमने बस डेटा फेच किया है। तो अब इसके अंदर से ये डेटा फील्ड निकालना है। बाकी और भी इंफॉर्मेशन है कि कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट लेंथ क्या है, तो ये सब ऑटो जनरेट हो रहा है मेरे बैकएंड से। रिक्वेस्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जब हम रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं तो किस टाइप का है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, but the status is 200. Okay, so we are pretty sure that this data is correct. So once we have this, what we will do is we will say this dot set state, and what are we going to set the state with? Avengers dot data, because that is what we are more interested in. This dot set state और ऐसे set करना है, and this has to be some value. So I will say Avengers, and it is going to be an empty array. तो ये मेरा state है। तो हम लोग बेसिकली इसी एवेंजर्स को सेट कर रहे हैं विद द न्यू डेटा दैट आई एम रिसीविंग। डज इट मेक सेंस? इनिशियल स्टेट empty array, final state array of data that I am receiving. Since this is an array, this is going to create an array, and let's do that. Let's see if this is a problem or not. Refresh. Okay, failed to come. Okay, sorry, we don't want this delimiter. Any problem over here? Module unexpected token. Is there something wrong, guys? Can you point it out? Yeah, read the previous data, correct. Okay, अब हम लोग कंसोल पे नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे, हम लोग अपने कंपोनेंट्स पे जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, एंड दिस इज द एम्प्टी एरे. नाउ लेट्स प्रेस गेट डेटा, and what do you see? State changed, right? Now the state has this value. Pretty cool stuff. What we have done is we have fetched the details from the backend and has sent and now I have updated my state. तो अब मेरा जो state updated है, the updated state is now can be sent across to any other components that I create. So how does it feel, full stack developers, seeing this whole thing? Everything that we have been doing for a month and above is finally connected. सब कनेक्ट हुआ, डॉट्स जितने भी डॉट्स थे हमारे अभी तक के सारे डॉट्स कनेक्ट हुए. Obviously there are a lot of new things that have come into picture. We have two servers running. One is the front end server separate, one is the node server separate, and एक अपना cloud में connection अलग चल रहा है. Everything is modularized. अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, we can just target that part of the code and make this correction, and we don't even have to change the front end for that. अब आप डेटा फेच करके आप इस पे कुछ भी प्ले अलोंग कर सकते हो. You can create, update and delete, and that will be your task, the very last task that you will have for your course. Okay, thoughts. Now it's time for your thoughts. किसको लग रहा है कि ये बढ़िया चीज है, या किसको लग रहा है कि यार ये तो मेरे बस की नहीं है? कितना को लग रहा है ऐसा? क्या ये मेरे को देख के क्या करोगे?
व्हाट अबाउट द कोर्स, यू टेल मी अबाउट दैट. हम लोग अपना इंटरेक्शन करेंगे कभी आराम से, बट आज हम लोग वो कर रहे हैं जो इतने टाइम से जिसके लिए पढ़ाई कर रहे थे. गुरुजी के दर्शन. गुरुजी नहीं हूँ यार, मैं बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जो कि अ, बताना अच्छा लगता है मेरे को लोगों को. और आप लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, ये बेसिकली आई थिंक एक साल 1 1.5 साल एक्सपीरियंस वाले लोग को हैंडल करना आता है, क्योंकि आई कैन टेल यू द वे यू डू इट, बट यू ऑल्सो सी हाउ आई एम हैंडलिंग द एरर्स, राइट. हाउ आई एम हैंडलिंग द एरर्स, जब मेरे को पता है कि चलो ठीक है कहीं पे एरर हो रहा है, तो आई एम पिन पॉइंटिंग इट, पिन पॉइंटिंग इट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड सीइंग कि अच्छा ठीक है यहाँ पे एरर था तो मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी. या हमने ये भी देखा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोसेस में वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, हाउ द डेटा इज फ्लोइंग. अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो अब आप लोग के पास काफ़ी टाइम है. प्रैक्टिस करो, अपने से कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करो. एक टू डू एप्लीकेशन बना सकते हो आप. बेसिकली एक बैकएंड बनाओ जिसमें जो आपका फाइनल एप्लीकेशन होगा, यू विल बी क्रिएटिंग अ कंप्लीट टू डू एप्लीकेशन जिसमें आप ऐड, डिलीट, अपडेट और लिस्ट शो करने के लिए गेट करोगे, which will be very similar to what we have done over here. Only thing is you might have to change the data, you might have to change the way you show it. अब यहाँ से it's all up to your creativity. आपको inner technologies पता है. What you need to do is you need to use those technology and create an application of your own. कैसे डेटा फ्लो कर रहा है. अभी तो मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक डेटा पास कर दिया है. हम लोग यहाँ पे एक बार स्टेट अपडेट करने के बाद, ये बटन के बाद, once we click on this, the state is updated. I need to pass this data to, let's say, a display component. When I press this data, that display component gets displayed. सारे एवेंजर्स का नाम ले आए, फोटो ले आए, और उसके नीचे जो भी है, मतलब अब मेरे पास डेटा है तो उससे आई कैन प्ले अराउंड, राइट. ओके, बहुत ज़्यादा बात कर लिए. डाउट्स, टाइम फॉर डाउट्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट. आपका 8 से 10 का स्लॉट फ्री होने वाला है कल से, so be happy about it, and you can utilize it to work on your project, and I can utilize it in seeing what you guys are doing. Okay, and it feels good when you guys create something and put it out there and I can see it. It actually is a good feeling. तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग सब अपना प्रैक्टिस मत छोड़ना. बहुत मेहनत की आपने, 1 महीने तक लास्ट की हो. जो भी लास्ट बंच ऑफ सेट है, last bunch is the ones who actually learns a lot of stuff and get to interact it. So let's first of all clear out all the node modules. All right. Nickel ML models or MERN पे, I don't think so. Why? Because backend will be different. आप Flask और React कर सकते हो, Flask और Django React कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो. But the problem is the web support has to be different. ये full stack और web development है, इसमें HTTP models use होता है. आप जब ML models में करोगे तो you can represent the data. That is a very different concept. But definitely try to use your ML models with React as a front end. आपने backend Python में लिख लिया, models create कर लिया, आपने library install कर ली, और उस लाइब्रेरी को जो डेटा आप फेच करोगे बैकएंड से फ्रंट एंड में, उसमें अब आपको रिएक्ट और जेएस का नॉलेज आना चाहिए. तो डेफिनेटली यू कैन यूज दोज मॉडल्स. ओके,
Yes, TensorFlow is something that is for handling these kind of big data. Elasticsearch is something that your Amazon provides. Elasticsearch के बारे में पढ़ना अगर आपको समय मिलता है तो Elasticsearch आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है. Let's delete node modules. अच्छा इसको तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी पुश्ड है. इसका नोड मॉड्यूल गया और रेस्ट एपीआई का नोड मॉड्यूल्स गया. कूल. हाँ, what is your doubt, Bikram? In the meanwhile, I'll just push this code. Git add. It feels good to push everything. अरे REST API का node modules दिख रहा है. REST API का node कहाँ है? अच्छा यहाँ है. Let's delete this. I can create a git ignore file of my own and I don't have to do it all over again. But अभी के लिए I'll just stick to this. All right. Git commit -m. What should I say? Full stack or mon stack? Find my Avengers app. Get push origin main. Cool. All right. मजा आया कोर्स में, सीखने को मिला. देखो कितना सारा कंटेंट हमने बना लिया एक महीने में. 1 2 3 4 5 6 7 8 पैसा वसूल. ओके, विक्रम का कोई ऐप है? Which is this? Let me just open. I'm opening it, Vikram. Okay, if you don't mind. Let's see what he has created. All right, there you go. क्या दिक्कत है इसमें? लॉगिन करूं? React यूज तो कर रहा है ये. I can see the React being used. This page uses the production build of React. Login with Spotify. Agree. So Spotify account तो है मेरा, but what is the problem? What do you want to? Can you do it on your system? Like I have to create my account and all that stuff. I don't want to do that. Do you want to share your screen? Okay, I will give you the access. Go ahead, share your screen and also speak. सर आ रहा है क्या मेरा स्क्रीन? Yes, आ रहा है. यस. ये क्या हुआ? रुक जाओ. यस सर. सर मेरे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं यहाँ पर जो मेरा वो है ना कि बॉडी प्लेस में लगाया तुमने. यस सर, चल सही रहा है, मगर मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें गलत है कि मैं डॉम को एक्सेस कर रहा हूँ, वर्चुअल डॉम की जगह. करेक्ट. रियल डॉम को. करेक्ट. करना क्या चाह रहे हो वो देखना पड़ेगा मेरे को. यस सर. बॉडी डॉट एड लिसनर. सर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है. अभी चल रहा था ना तुम्हारा. मेरा नेट सही नहीं चल रहा है सर. नहीं, नेट सही चल रहा होगा. दिस इज लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट. चल रहा है तुम्हारा सर्वर चल रहा है? यस सर. 1 मिनट.
सर वो लोकल होस्ट पे खुल गया था। हाँ वही तो, लोकल होस्ट नहीं चल रहा है। एक मिनट सर, मैं अपना उस पे चलाता हूँ सर। एग्जैक्टली, तुमको npm स्टार्ट करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। करेक्ट। नहीं सर, ये वो जो रिकनेक्ट होता है ना, वो मेरा हाँ लोकल होस्ट पे जा रहा है, मुझे वहां पर दूसरा यूआरएल देना है अपना स्पॉटिफाई के ऐप पे। हाँ हाँ हाँ, लॉग इन करने के बाद ना। यस हाँ सर। अब चल जाएगा। बस सर मुझे इसमें एनिमेट करना है एक चीज, जैसे मैं स्क्रॉल करूं हम्म, तो वहां पर हेडर ब्लैक हो जाना चाहिए। आने दो, यस सर। दिखाना कोड दिखाना तब तक। यस। स्ट्रक्चर दिखाना सबसे पहले, अपना फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर्स, लेफ्ट लेफ्ट टॉप पे विजुअल स्टूडियो में। हाँ यस सर। ओके, सो तो स्टार्ट किया। सास यूज कर रहे हो ना? यस सर। ओके नाइस। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है अपने, कंपोनेंट्स पे क्रिएट किया है, इमेजेस क्रिएट किया है, कूल। कैन यू गो टू द app.js? 1 मिनट सर। यस। तुमने स्पॉटिफाई की एपीआई यूज की हुई है राइट? यस सर। ओके। वेब और एपीआई। कैटेगरी इन्वेस्ट किया हुआ है। रोमांटिक सॉन्ग सुनते हो? नहीं नहीं, वो ऐसे ही रखे हैं बस। नहीं नहीं ठीक है, सुनना भी चाहिए। कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी कैटेगरीज है। यस सर। आपने रिटर्न लॉग किया है टोकन के बेसिस पे लॉगिन में आएगा, नहीं तो वो प्लेयर में चला जाएगा। यस ठीक सर। है ओके। और आपने यहाँ पे स्पॉटिफाई का वो भेजा हुआ ड्रॉप है, दे दिया प्रॉप्स दे दिया है, विच है। इज यस गोइंग टू टू प्लेयर। प्लेयर में जाना। सर। 1 मिनट। प्लेयर्स में आपको डेटा मिला, डिस्ट्रक्चर किया, एंड देन यू हैड फ्रैगमेंटेड इट, एंड देन यू हैव अ बॉडी। ठीक है ठीक है। यस। वो बॉडी में जाना, बॉडी को भी स्पॉटिफाई मिल रहा है। ओके, नाउ दिस बॉडी इज ओवर हियर। ये आपने स्टाइलिंग कर दिया, ठीक है। ऊपर यूज स्टेट स्टाइल और सेट स्टाइल किया हुआ है, और यूज इफेक्ट में कांस्टेंट प्लेलिस्ट एंड सेट स्टाइल्स टू स्टाइल्स किया, ठीक है। और प्लेलिस्ट दिया, कूल। और ऊपर आपने कॉन्स्ट नाम दे दिया है प्लेलिस्ट्स का। यस सर। ओके, और उसके बाद राउट्स क्रिएट किया है फॉर ईच वन ऑफ। यस सर। एग्जैक्ट पाथ नहीं यूज किया? अच्छा, अगर वो अच्छा सर सबसे नीचे डाल देना उसे, हाँ लीव एग्जैक्ट इट। की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके ठीक है यस। ठीक है। दिखाना। यस सर, खुल रहा है। नाइस ओके। ये- सो वर्किंग फाइन, बट यस। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने डॉम यूज किया है कि वर्चुअल डॉम यूज किया है? यस सर। ठीक है। कहाँ पर है वो वाला कोड? सर ये ना, जैसे मैं इसे ऊपर करता हूँ, ये चल सही रहा है, ऊपर ये एनिमेशन आ रहा है ना सर, ये ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ 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 ये सही चल रहा है, मगर ये नहीं पता लग रहा है कि ये मैंने वर्चुअल डॉम किया है कि रियल डॉम एक्सेस किया ठीक है। तो एक बार बैक जाना, है। बैक यस। जाना। कहाँ पे ये वाला कोड जो आप दिखा रहे थे इनिशियली, वो कहाँ पर है? यहाँ सर, ये यूज इफेक्ट में, ये बॉडी। ठीक है, ये तो आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है सीधा, यस सर। और सीधा आपने ऐड किया है डॉम में। ये हो रहा है आपका डॉम, डॉम एक्सेस हो रहा डॉम एक्सेस हो रहा है डेफिनेट। एक बार आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके बॉडी देखना, वो पूरा डॉम का एक्सेस देगा। बट आपने ये स्क्रोलिंग इफेक्ट के लिए, बॉडी स्क्रोलिंग इफेक्ट के लिए, व्हाई हैव यू यूज्ड कंप्लीट बॉडी? व्हाई कांट यू यूज इट इनसाइड द ये स्क्रोलिंग इफेक्ट आपका है। वहां पे? सर स्क्रोलिंग तब यूज होगी जब मेरा ये बीच वाला यूज होगा, हाँ, इधर वाला, तो ये ये वाला बॉडी कहाँ इधर। पर है? ये वाला कंपोनेंट कहाँ पर है जहाँ पे आप लोड कर रहे हो सॉन्ग्स? ये सर यहाँ पर है प्ले लिस्ट, ये रहा सर। है ना? अब यस सर। प्लेलिस्ट में जब आप चेंज जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पे यू हैव टू मेक दैट इफेक्ट कनेक्ट
और चेंज द स्टेट ऑफ योर हेडर। सर स्टेट को फिर मैं उधर कैसे लेके जाऊंगा सर? ये अभी आपका एडजेसेंट कंपोनेंट है कि चाइल्ड कंपोनेंट है? चाइल्ड कंपोनेंट है सर ऐप उसमें। जैसे मैं बैक गया ना, हाँ अगर मैंने प्लेलिस्ट खोली कोई, तो हाँ यहाँ इसका चाइल्ड कंपोनेंट है ये प्लेलिस्ट इन्फो। यहाँ पर इन्फो सॉन्ग्स आ जाएंगे पूरे। हाँ, नहीं नहीं, ये जो इफेक्ट आप डाल रहे हो हेडर में, ये सिर्फ सॉन्ग्स वाले में आ रहा है, यस सर, ये इन्फो में आ रहा है खाली, और कहीं नहीं आएगा। ये कहीं नहीं आएगा। यस ठीक है, सर। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट ही करना पड़ेगा सर। मैंने पहले वो सोचा था कि कॉन्टेक्स्ट से, मगर वहां पर दिक्कत हो सकती है थोड़ी। नहीं, कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉप लेवल पे रहेगा, यस और सर। ये टॉप लेवल पे रहेगा, और वो टॉप लेवल से आपको फेच करना पड़ेगा डिटेल्स स्क्रोलिंग का यस कॉन्टेक्स्ट, सर। और फिर वहां से यूज करना, क्योंकि ये काम तो करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए या कोडिंग स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो ये गड़बड़ है। यस सर, ये बीच में अटक भी रहा है ट्रांजिशन ना थोड़ा, हाँ यहाँ पर थोड़ा बीच में ये अटक रहा है बीच में। हाँ, ये ट्रांजिशन अटकेगा, क्योंकि क्या हम्म। कर रहे हो तुम कि अचानक से रिएक्ट के वर्चुअल डॉम से जंप करके बाहर जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, यस सर। है ना? तो इसको कॉन्टेक्स्ट में हैंडल करो, जो तुम्हारा मेन कॉन्टेक्स्ट होगा ना, प्रोड्यूसर, जहाँ से यस सर। जो भी कंज्यूमर है, यस सर। यस उसको सर। तुमको पास करना पड़ेगा। यस सर। और तो सर तुमने एक और। यस सर। कॉन्टेक्स्ट यूज किया है इसमें कहीं भी? यस सर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज की सर। हाँ, ये रहा सर, मुझे थोड़ा कहीं से कॉन्टेक्स्ट, हाँ, ये रिड्यूसर। करेक्ट, यहाँ से तुमको पास करना पड़ेगा। यस सर। एक्शन सर बना, एक डाउट है कि स्क्रॉलर यहाँ। का एक्शन भेज देना। यस सर, हाँ, एक मिनट। साइड बार। सर जी, यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ लोकेशन के पाथ नेम के ऊपर। ठीक है। अगर लोकेशन का पाथ नेम ये है, तो ये हाँ, सही तरीका है सर करने में? लोकेशन तो तुमने इसका हैंडल किया है ना, फिर से तुमने नो डॉम का सर, यूज लोकेशन कर रहा है मैं तभी रिएक्ट रूटर का। यूज लोकेशन है, ठीक है ठीक है। हाँ, देन यस इट इज सर। ओके, देन इट इज ओके, देन दिस इज फाइन। अगर आपने डायरेक्ट लोकेशन डॉम का यूज किया होता देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। सर पहले वही किया था, फिर मैंने रिएक्ट राउटर देखा, उसमें लोकेशन का वो था, हुक था। एग्जैक्टली, यस सर। लोकेशन का हुक होता है, और इससे पाथ नेम तुम्हारा उसका आएगा जो भी तुम्हारा कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो सर्च कंपोनेंट लोड करो मेरा। नहीं सर, अगर लोड होता है तो ये क्लास ऐड कर देगा उसमें, हाँ, मतलब जो भी है, सिलेक्टेड। सर्च वाला जो भी तुम्हारा कंपोनेंट होगा ना, वहाँ पे सर्च, जब ये क्लास में जाओगे तो क्या है वहाँ पे, ये ऑप्शन क्या है, लोकेशन डॉट पाथ नेम मैच करके। अच्छा, तुम इसका स्टाइलिंग कर रहे हो? यस सर। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, मेरे को लगा कि तुमने कोई कंपोनेंट लोड करना है सर्च का। ठीक है ठीक है, यस हाँ, दैट यस। इज, दिस इज फाइन। अगर आपने डायरेक्ट लोकेशन डॉट पाथ नेम यूज किया होता तब प्रॉब्लम होती। यस सर, अगर रियल डॉम का करूँ तब दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी, चलेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। हाँ, आपको अगर परफॉर्मेंस चेक करनी होती है ना, एक बार अपने मेन स्क्रीन में जाना, यस सर। राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट। हाँ, इंस्पेक्ट में परफॉर्मेंस टैब आता परफॉर्मेंस। है, यस खोलना, सर। खोलना परफॉर्मेंस टैब। खुल गया सर। हाँ, अब इसको आप देखो रिफ्रेश करके, इट इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट जब आप रिफ्रेश करोगे, पहले रिकॉर्ड दबाना और उसके बाद रिफ्रेश करना, और उसमें देखना कि कौन सा पार्ट कितना टाइम ले रहा है। या इससे बेटर चीज मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप नहीं करो नहीं इसको, नहीं। इसको स्टॉप यस। करो, ऑडिट करके होता है इसमें, ऊपर जाओ। ऑडिट सर। हाँ, ऑडिट। वहीं पे आएगा, ड्रॉप डाउन में आएगा, नहीं सर। लाइट हाउस, लाइट हाउस, अच्छा, लाइट लाइट हाउस, हाउस। हाँ, उसी में ऑडिट होता है, जनरेट रिपोर्ट, और डेस्कटॉप करो, कहाँ पर सर? ये अच्छा, डेस्कटॉप, जनरेट रिपोर्ट। ऑप्शन ऑप्शन डेस्कटॉप करो पहले। यस सर। हाँ, अब जनरेट करो। तो ये क्या करेगा कि आपको आपके एप्लीकेशन के बारे में बताएगा, तो उसमें आपको बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने की है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, ऑल दिस स्टफ। और यस इसमें सर। एक ऑप्शन आता है जो आपको ये भी बताएगा कि आपका एप्लीकेशन कितना हैंडल कर सकता है। एक रिपोर्ट जनरेट होगी, देखो परफॉर्मेंस रिपोर्ट परफॉर्मेंस 31। कहाँ पर है,
तो ये जो आपने कंटेंट पेंटफुल यूज किया है ना, ये जो सेकेंड्स हैं इसको मिनिमाइज करो। और ये मिनिमाइज कैसे होगा? बाय यूजिंग हुक्स, मैक्सिमम हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज करो और स्टेट यस वाइज करो। सर, तो ये कहाँ परफॉर्मेंस कहाँ पर कम हो रही है? ये बता सकता है, मैं ऐसे देख के तो नहीं बता पाऊंगा, बट नीचे जाओ, फर्स्ट कंटेंट पेंट में जाओ। यस सर। हाँ, इसको तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कहाँ पे? एरर में जाओ, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, डुप्लीकेट डुप्लीकेट मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आपने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की हुई है कोड में जो डुप्लीकेट हो रहा है। लेगेसी सर्विंग जावास्क्रिप्ट टू मॉडर्न ब्राउजर्स। हाँ, तो आपने ये वाला एरर मेरे हिसाब से उससे आ रहा है, बॉडी से, बॉडी डॉट जो आपने यूज़ किया हुआ है ना, उससे आ रहा है। यस सर, यस सर। फिर आपका सर्विस स्टैटिक फाइल्स जो आप यूज़ कर रहे हो, नीचे जाओ सर, सर्व स्टैटिक एसेट्स। तो ये जो स्पॉटिफाई का, अब इसमें से जो फर्स्ट वाला है जो चंक डॉट जेएस है, आप हटा नहीं यस सर। सकते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% तो नहीं जा पाओगे, बट जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा चीज़ें यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस स्लो होता रहेगा। तो वट एवर इज रिक्वायर्ड जस्ट यूज दैट। यस सर। ठीक है? यस यस। यस सर। ओके, चलो, इट्स अ नाइस एप्लीकेशन। यस, थैंक यू सर। सर कहाँ से करूँ सर अभी बंद? तुम कर दो या मैं हटा स्टॉप शेयर। यस सर। दूं? ओके, दैट वाज अ नाइस एप्लीकेशन, विक्रम। थैंक यू सर। All right. How much should it be, sir? Perform. नितिन, परफॉर्मेंस अगर आपका 90% के ऊपर रहता है तो अच्छा काउंट किया जाता है। 85 to 90 के ऊपर इज कंसिडर्ड गुड, वहाँ पे मार्कर आ जाता है। बट थोड़ा परफॉर्मेंस को जानने के लिए थोड़ा एडवांस्ड जाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, एक एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स देखना पड़ेगा। All right, chalo guys. So I will be communicating you the final uh, assignment to you guys, and based on that we will have some assessment जो भी आपने अभी तक किया हुआ है उस पे, plus your performance, plus your engagement in the classroom, plus the timelines that you have stuck to. All this will be considered, and then we will be rolling out your certificates as soon as possible. Okay? And you will get all the informations in some time. So it was really nice having a connection with you. Hopefully we come back in future and have more courses with you guys. You can learn a lot from where it is. uh, all the best. We are always connected on Slack, so please do use that channel. Keep the channel active, and you have now become the alumni of Cypher Schools. So we will be interacting, keep on pushing, keep on getting the feedbacks from you guys. What can be done better? What can be changed? What can be continued? All those things should come from you because you are the people who are going to make Cypher Schools good or great. Okay. So thank you, Vani. Thank you, everyone. Have a really nice day and rest of the remaining years. And have keep learning. All the best. Stay safe. And I shall see you when we see each other again. All right. Bye bye, guys. Take care. Stopping the share. We Bye, will. sir. Bye bye. We will connect on Slack. Bye. Bye.